स्कूल नगरोटा सूर्या में 3 दिवसीय साइंस एवं सोशल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय साइंस एवं सोशल साइंस प्रदर्शनी में कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने अलग अलग विषयों पर अपने मॉडल तैयार किए और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इस प्रदर्शनी को सभी अध्यापकों ने एवं अभिभावकों ने खूब सराहा और खूब निहारा। छोटे छोटे बच्चों ने भी इस प्रदर्शनी में खूब चार चांद लगाए। स्कूल के प्रधानाचार्य शेखर मोदगिल ने भी बच्चों के इस प्रयास पर उनकी प्रशंसा की। Good afternoon, everyone. My name is Swastika Pathania. Her name is Navita Thakur. Her name is Tanishka Sharma. This is a model of water cycle. It has three major states: evaporation, condensation, and precipitation. Thank you. Good evening, my name is Karima. I am from class 10th. Today's my model is excretion system. It is a removal of metabolic material. The kidney is the main organ of respiratory system. It includes unibladder, urethra, and all organs. From class 10 and I am here to explain you the reflex arc. So the path followed by the stimulus during the reflex action is called reflex arc. So when we touches the hot fry pan, the heat receptors pick up the stimulus from the hot fry pan and send it to the spinal cord, and then spinal cord send the motor neurons to the muscles, and then muscles send the message to the hand to leave the fry pan. Thank you. And this is the structure of neuron. The neuron is a structural and functional unit of nervous system, and it is divided into three parts. Firstly, the cell body, then the axon, and the axon terminal, or we can say axon ending. And the axon is covered with a protective layer which is known as myelin. So on the dendrites there are present receptors, and from the receptors the nerve impulses are carried out to the dendrites, and from the dendrites to the axon, to the cell body, and from the cell body that nerve impulses are transmitted to the axon, and from the axon it is transmitted to the nerve ending. And the gap between the two neurons is known as synapse, and by this process the nerve impulses are transmitted from one neuron to the second neuron, and at last it finally goes to the organs. Morning, we are the student of class 9 DAB Nagrota Surya. Today we made a project on drip irrigation system. As we all know that the level of water in our country is decreasing day by day, and it is a huge problem for our country. To solve this problem, we made a project on drip irrigation system. First, we made a well in which the rainwater can sow, and then the water is transferred to the water tank, and then the water is going to the field with the help of a pipe. Then the main function of drip irrigation system starts. The water starts falling drop by drop at the position of the plant's root and help plants to grow faster and healthier. Thanks and have a nice day. So good afternoon all of you. We are the student of class 9 and today we are going to show you our eco-friendly model. So this is hydroelectricity power. This model can demonstrate that how the energy can be converted into electricity. Then this is the water energy. This can demonstrate how the wind turbines can be converted into electricity. And the last one is solar energy, which can this model can demonstrate how the solar energy can be converted into electricity. My name is Arnu Kaushal and I am from class 10, and his name is Anmol Gleria, and we made the model of the human heart, in which the deoxygenated blood comes from the vena cava from the whole body and enters the right atrium, and from the right atrium it enters to the right ventricle, and from the right ventricle it enters to the pulmonary arteries, and from arteries it travels to the lungs, and from lungs it came back by the help of pulmonary veins and enters the left atrium, and by the opening of tricuspid valve it enters to the left ventricle, and from left ventricle it enters in aorta, and from aorta it distributed in whole body. जी सर, आज डीएवी नोटा सूर्या में
एक साइंस और सोशल साइंस के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। ये प्रोजेक्ट्स जो थे ये उनके सिलेबस से रिलेटेड थे और इनमें वो एक्टिविटीज़ उन्होंने प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स के थ्रू डिस्प्ले की थी, जिससे कि उनको अपने सिलेबस में भी हेल्प मिल सके और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन प्रोजेक्ट्स को भी यूज़ कर सकें। इसमें आज हमारी पीटीएम थी, तो पीटीएम पे हमने फिर इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया था और पेरेंट्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा सराहा और बाकी स्कूल के बच्चों ने भी इनको देखा और टीचर्स ने भी देखा और कुछ एक मॉडल जो थे वो वर्किंग थी। तो उनमें फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है या सोलर एनर्जी कैसे यूज़ हो सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी टेक्निक्स डिटेल में बताई गई थी जो कि वर्किंग मॉडल्स थे। उनमें उन्होंने ये सारी वर्किंग्स के थ्रू बताई। तो मैं बच्चों को इसके लिए बहुत सी बधाई देता हूँ और आगे भी बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और हम आगे भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं।